we are staying at I Love Bell Bottoms, which is in Osran, in North Goa. And we were here for one day, and it costed us somewhere around, I think, 7,000 for a pool facing room. And this is approximately a 300 square feet room. Okay, so when you enter the room, this is your wardrobe. You can open it, close it. It's very flexible that way. It will not look untidy. So sliding doors है इधर. यहाँ पे हमारा छोटा वाला सूटकेस रखा हुआ है. यहाँ पे लॉकर है. There are some drawers जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो. And once you move the sliding door, there are some hangers here. And yeah, so some hangers here, and the ironing board is right here. Iron, I think, अगर आप request करते हो housekeeping को, maybe they provide, because obviously हर एक room में शायद नहीं है. Then this is again your storage area. So huge section जहाँ पे आप अपना luggage रख सकते हो. Luggage रखने में हमें बिल्कुल भी कोई problem नहीं हुआ था. This is our big suitcase, Vivek's backpack, my backpack, and this bag. Both of this I've got from Goa itself, from Vagator, and you can see this in the Goa shopping hall. Okay. Another very cutesy thing. Please show them the torch, because यहाँ पे हमने देखा कि काफी light जाता रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक torch भी provided है for emergency if you want to go to the washroom and all. And यहाँ पे another shelf is there, and 2 more shelves नीचे. तो shoes वगैरह भी आप यहाँ से और यहाँ पे place कर सकते हो shoes. Okay. Very convenient that way. So once you come ahead, again you have 3 shelves out here. सबसे नीचे ये वाला shelf है जहाँ पे fridge रखा हुआ है. We have not used this, but this is your fridge. Okay, this also has a very retro vibe. Red customize किया हुआ है उन्होंने. And ये shelf में मेरे कुछ cosmetics के items हैं. यहाँ पे you have the water kettle जो होटल की तरफ से है. The water kettle, 2 coffee mugs, all your tea coffee sachets, and 2 glasses. Okay. और भी सामने आते हो तो बहुत ही एक यूनिक चीज आपको देखने को मिलेगा, which is this TV, which has been customized by them with this wooden case, ना? Yeah. This wooden case which is white in color. ये जो switches है, they look very real, but ये सिर्फ show के लिए, कुछ होता नहीं है इनसे. But look at the whole look of the TV. It's so unique. I've never seen something like this in my life, and neither has Vivek. So very unique. TV shelf जो है gives a very homely vibe. It doesn't look like a very orthodox kind of a shelf. So the TV unit is very nice. यहाँ पे भी drawers हैं. So storage अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना है या बहुत दिन के लिए आ रहे हो तो ये रूम एकदम परफेक्ट है आपके लिए. ये है study desk, work desk, eating desk, उसके लिए आप यूज कर सकते हो. मल्टीपल प्लग पॉइंट्स है. बेसिक टेबल, वेरी बेसिक टेबल. यहाँ पे मेन्यू कार्ड्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है. ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स, ऑल ऑफ दोज डिटेल्स आर प्रोवाइडेड राइट हियर. यहाँ पे टिश्यूज है. अनदर थिंग, अनदर एलिमेंट व्हिच आई हैव नॉट रियली सीन इन मेनी होटल्स. सो डस्टबिन इज हियर. यहाँ पे there are 2 pictures. I don't really know, but ये तो मुझे लंदन लग रहा है. This I'm not very sure of, but 2 very nice photographs are there. Okay, now we'll just quickly show you these 2 chairs and this coffee table in the middle. The coffee table is pretty basic, okay? Basic wooden coffee table है. But ये तो chairs आप देखो कितने कलरफुल है. ये दोनों I think इन्होंने Amazon से लिया है, because ये I think set of 2 में आता है for 11 or 12,000. So whenever we shift into our own house, मेरा भी plan है ऐसे chairs लेने का, because बहुत कम जगह occupy करते हैं, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं. Okay, another very 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 amazing thing about this room is this couch. So this is perfect if you want to just chill, read a book. Also something which I've never really seen in much of the other hotels. So I'll quickly show you. You can just completely lie down here, okay, and get up very easily. So like too good. I think one of the key highlights of this room would be this couch. Yeah, it's really like it's comfy. Very comfy, no? Yeah. So young people like us can just come chill here. यहाँ से आप एक बार लेट जाओगे ना, आपको उठने का मन ही नहीं करेगा. मैं यहाँ पे कल हाफ रात के लिए सो भी गई थी. So generally हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ या तो bathtub या तो the view is very sexy, very unique. We invest in that. But यहाँ पे ये हमें काफी अच्छा मिल गया. Okay, now coming to the bed. Is this queen size or king size, Batu? Any idea? Maybe queen size. Queen size, yeah. So guys, the light again went off. That's the problem in this hotel. Light काफी जाता रहता है, and we don't have like power backup. Anyway, this is the queen bed. Okay, यहाँ पे आपका side table है. Again 2 drawers. तो अगर आपको drawers and shelves का like एक amazing वो चाहिए ना, तो आप ये होटल में आ सकते हो. यहाँ पे ये रेट्रो स्टाइल में अगेन फोन है. डोंट थिंक इट डज नॉट वर्क. इट डज वर्क, एंड मे बी दे मेड दिस लाइक कस्टम मेड, बिकॉज आजकल ये फोन्स मिलते कहाँ पे हैं. सो ये रेट्रो एलिमेंट्स ना बहुत सेक्सी है. नाउ लुक एट दिस. दिस इज योर रीडिंग लैम्प. ठीक है, अभी लाइट चला गया इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल. सो लेट्स से यू वांट टू रीड हियर या लेट के, इसको ऐसे कर लो एंड योर पार्टनर वोंट गेट डिस्टर्ब. यहाँ से आपको लाइट भी मिलेगा. दैट्स अमेजिंग. सो उस साइड पे आई वाज देयर लास्ट नाइट. यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है. वन कंप्लेंट व्हिच आई हैव,
Oh, light is back. Thank God. Look at this. Another very cutesy element, you guys. And this is fixed here, okay? Because India में, you know, लोग इसको भी उठा के लेके जा सकते हैं. So they have just fixed it here. It's a very cute two-wheeler, which is like a very important thing about Goa, right? Whole of Goa owns two-wheelers. So ये जो है, ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर element लगा मैं. So just give them an overview of the room. I think you will really like it. Look at the floor, it's also sparkling and एकदम squeaky clean था ये रूम जब हम आए थे. ऐसा लगेगा कि आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो. एकदम भी एक भी एलिमेंट गंदा नहीं था. Very very well maintained. So yeah, that's the overview of the room. We'll show you the washroom. That is the only thing which is left. But before that, just quickly, we'll show you the pool view. Guys, it's nothing great, but it's a guitar-shaped pool. Okay, so again something different. So that's the pool. That's the guitar-shaped pool. I hope you can make out. So this is your reception area. Okay, जहाँ पे मेरा finger है वो reception area है. ये सारे आपके rooms है. ये हमारा pool facing room है, इसलिए हमें pool दिख रहा है. I think that's that. So we'll quickly show them the washroom, and then guys, we are running late because we have to travel to South Goa also. So this is the washroom. Come. Okay, घुसते ही the beach vibe starts. You have the starfishes and ये क्या बोलूँ मैं इसको? The water. Yes. Yeah, the waves. Yes, the water on the shore. वैसा वाला एक vibe आ रहा है यहाँ पे. तो basic toilet seat है. This phone also by the way works. Generally hotels में ये phones work नहीं करते, washroom वाले सिर्फ show के लिए होते हैं, but यहाँ पे अभी हमने call receive किया reception से. You have a hand shower. You have the main ceiling shower, which is great, very good. And I don't know, have you tried this, madam? No. Yeah, so you have somebody elderly coming in or a kid जिसको आपको बिठा के नहलाना हो, तो यहाँ पे बिठा दो, यहाँ से hand shower. Our guys can just chill and watch the phone. They can chill on the toilet seat also. Anyway, towel hanging वाला सीन है. ये जो है ना, ये blinds है. अगर आप comfortable नहीं हो तो आप लगा लो. अगर आप comfortable हो तो इसको आप खोल भी सकते हो. तो आपको रूम का व्यू मिलेगा यहाँ से from the washroom itself. And last part is this basin. इसके नीचे भी यहाँ पे sand वाला vibe है. Looks like real sand to me and real seashells right there. तो seashells. So पूरा बहुत ही intricately planned है ये होटल. And वहाँ पे आपको toiletries दी गई है. So you have shower gel, shampoo, conditioner, the basics, and toothpaste. And आप लोगों का कुछ है shaving kit वगैरह? Yes, yes, it was there. So shaving kit is there, toothpaste, toothbrush, all that is there. वहाँ पे 2 glasses रखे हैं. क्यों रखे हैं? Please मुझे मत पूछिएगा. Glasses should be in the bedroom. But यहाँ पे क्यों रखे हैं मैडम? Any idea? Gargle वगैरह करने के लिए Listerine? Yes. Yeah, I was guessing Listerine या gargle करने के लिए. And hair dryer भी है. Very important for us girls. But मैंने यहाँ पे shampoo नहीं किया, तो मुझे काम नहीं आया. And yeah, magnifying mirror भी है. Generally 5-star का provision होता है ये, but यहाँ पे था. It's a 4-star hotel. So guys, so that was all about the room tour in I Love Bell Bottoms in North Goa. So yeah, this was an amazing hotel. The location was really perfect. ओजरान से पास है, वैगेटोर से पास है, एकदम मेन रोड में है. होटल के बाहर ही स्कूटीज एंड कार्स अवेलेबल रहते हैं फॉर रेंट. हमने एक फसीनो लिया था, हमें कॉस्ट किया 700 rupees for 24 hours. And check-in time is 2 PM, which is not that great because the flight timings don't really match. लेकिन कल हमें early check-in मिल गया था 12:15. तो 12 बजे, 12:15 से 12:30 बजे आपको check-in मिल जाएगा. And बाकी the food, dinner was good. Sorry, lunch was good. Lunch was really good here. मेरे vlog में आपको मिल जाएगा वो. Breakfast was okay, not too good quality. Okay था breakfast. And yeah, room is very spacious. So that couch is really nice. And view तो उतना कुछ great था, room में थे ही नहीं. हम 3 से 4 बार स्कूटी लेके बाहर निकले थे. So that was all about the room tour. Hope you really enjoyed watching this video. If you did, like, share, subscribe, comment, and I'll see you in my next video very very soon. Love you all. Take care. Bye bye.